वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन XYZ। आज हम बच्चों कक्षा 10 की जो SST की आपकी डेस्क वर्क है, आज हम उसका मॉडल पेपर 2 है उसको हल करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हमने इसका जो मॉडल पेपर 1 था वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगर बात करें तो आपका मॉडल पेपर जो रहने वाला है वो आपका मॉडल पेपर 2 रहने वाला है, जो आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। सेकेंडरी एग्जामिनेशन क्लास 10 रहने वाली है। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस यहाँ पर रहने वाला है। तो चलो बच्चों एक एक करके सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। तो आज का जो पहला सवाल है जिसके अंदर टोटल आपको 18 यहाँ पर RBSE पूछे जाएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस टोटल 18 होने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न की बात करें तो 1 नंबर का रहेगा आपका। पहला सवाल है हु वॉज कोवेर, तो आपको इसको बताना है कि कौन है जो क्या है बच्चों, हु वॉज कोवेर। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ सार्दिनिया पिडमाउंट, द कंट्री दैट सेवरली अफेक्टेड बाय द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। आप उस कंट्री का नाम बताना है, वो है बच्चों आपकी अमेरिका। द पेड सर्वेंट्स अपॉइंटेड बाय द कंपनी टू सर्वाइव द वीवर्स वर कॉल्ड इज कॉल्ड, तो यहाँ पर होगा बच्चों गोमास्ता। वेन वॉज जापान्स ओल्डेस्ट बुक डायमंड सूत्र प्रिंटेड, डायमंड सूत्र कब प्रिंट की गई थी आपको उसका ईयर बताना है। तो इन 868 AD। यहाँ पर आ जाएगा अंडर हुज प्रेशर डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट अबोलिश द कॉर्न लॉस, तो यहाँ पर होगा आपका इंडस्ट्रियलिस्ट एंड अर्बन वेलर्स। अगला है व्हेन डिड प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट, तो प्रोजेक्ट टाइगर कब हुआ था, ये 1973 में हुआ था। अगली बात करें क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज यूजेज सिलिका एंड जिप्सम एज रॉ मटेरियल, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीमेंट इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 8 है द बेसिस ऑन विच रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल इज, तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 है द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर अंडर द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट कनेक्ट्स सिलचार असम टू, तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पोरबंदर गुजरात से। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो यहाँ पर है कि एजुकेशन बिलोंग्स टू विच लिस्ट, तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंकर्ड लिस्ट। सिनला लैंग्वेज वॉज डिक्लेयर्ड द ऑफिशियल लैंग्वेज इन श्रीलंका इज इन 1956। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज चाइल्ड सेक्स रेशियो लेस देन 850, तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 13 है भारतीय जनता पार्टी यानी जन संघ वॉज फॉर्म्ड इन, तो कब बनी थी ये बच्चों, 1951 के अंदर बनी थी। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट इन ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो आपको बताना है तो वो होगा इंस्टेंट डिसीजन। क्वेश्चन नंबर 15 है द ऑर्गेनाइजेशन दैट इश्यू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो आपको उसका नाम बताना है, वो है UNDP। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द नीड ऑफ क्रेडिट इन रूरल एरियाज, तो यहाँ पर होगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी, नाम है बच्चों फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। ग्लोबलाइजेशन हैज लेड टू इंप्लीमेंट इन लिविंग कंडीशंस, ऑप्शन नंबर बी, ऑफ पीपल इन द डेवलपमेंट कंट्रीज। इन इंडिया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास्ड इन, तो कब बनाया गया था, ये 1986 के अंदर इसको बनाया गया था। अगली बात करें क्वेश्चन नंबर 2 है, तो यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस होंगे। टोटल जो क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर आपके पास 6 क्वेश्चंस होने वाले हैं जिनको आपको फिल करना है। पहला है इन फ्रांस वॉज पोर्ट्रेड एज ए फीमेल एलिगेरी ऑफ द नेशन, तो यहाँ पर होगा बच्चों मेराइन, तो क्या होगा यहाँ पर मेराइन। दूसरी बात करें, दूसरे में बोला है इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ द पल्स इन द वर्ल्ड, तो वो होगा बच्चों आपका इंडिया। सबसे ज्यादा कंजप्शन कौन कर रहा है, इंडिया। अगला गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज प्रोजेक्ट्स आर बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो यहां पर होगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडिया। अगली बात करें द पैशन फॉर एंड फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी, तो यहाँ पर आगा बच्चों आपका रेस्पेक्ट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रेस्पेक्ट एंड फ्रीडम। वर्कर्स इन द सेक्टर डू नॉट
प्रोड्यूस गुड्स, तो यहाँ पर आ जाएगा टेरिटरी, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों टेरिटरी सेक्टर। अगला है स्टार्टिंग अराउंड सम फॉर रीचिंग चेंजेस इन पॉलिसी वर मेड इन इंडिया, तो यहाँ पर आएगा 1991। अगली बात करें वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस है। पहला है कि हु वाज कतगावा उतामारो, तो यहाँ पर बताना है, तो यहाँ पर आएगा कौन था ये बच्चों। तो यहाँ पर बात करें तो इटागावा उटामारो वाज ए रिनाउंड जापानीज पेंटर, ही वाज वाइडली नोन फॉर हिज contributions to an art form called ukiyo। अगली बात करें what do you understand by त्रिपिका कोरियना, तो यहाँ पर होगा द त्रिपिका कोरियना इज ए कोरियन कलेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स इन द फॉर्म ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंट्स फ्रॉम द मिड 13th सेंचुरी। अगला है हु एडिटेड द वीकली मैगजीन बंगाल गैजेट, तो यहाँ पर आएगा द वीकली मैगजीन बंगाल गैजेट वाज पब्लिश्ड बाय जेम्स ऑगस्टस हाइकी इन 1780। अगला है क्लासीफाई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इनटू टू कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड, तो यहाँ पर होगा कि agro based industries and mineral based industries। क्वेश्चन नंबर 5 है which two activities were included under the चिपको मूवमेंट, तो पहला है stopping deforestation in the Himalaya region, doing community afforestation। अगला है 6 है who provides services to oil and natural gas corporation in its offshore operations to inaccessible area and difficult terrain, तो यहाँ पर होगा कि Onhans Helicopters Limited provides services to oil and natural gas corporation। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो हाउ मेनी ऑर्गन्स आर देयर इन द गवर्नमेंट, तो देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्स रेशियो, तो नंबर ऑफ गर्ल चिल्ड्रन पर 1000 बॉयज इन एन एरिया इज कॉल्ड सेक्स रेशियो। अगला है why does it take more time to take decisions in a democracy, in democracy decisions are taken after a long discussion, therefore it takes more time in decision making। अगला है what do you understand by self help groups, तो self help groups are small saving and credit based groups where members mainly women come together for financial cooperation and empowerment। Write the full form of WTO, World Trade Organization, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेम ए प्रोग्राम बीइंग रन इन इंडिया टू मेक कंज्यूमर अवेयर, तो यहाँ पर होगा द नेम ऑफ द प्रोग्राम बीइंग रन इन इंडिया टू मेक कंज्यूमर्स अवेयर इन जागो ग्राहक जागो। आगे के क्वेश्चन है बच्चों अब आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के रहने वाले हैं। डिस्क्राइब एनी 4 फीचर्स ऑफ द सिविल कोड ऑफ 1804 इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन इन फ्रांस, तो पहला है द सिविल कोड ऑफ 1804 abolished birth based privileges, it established equality before the law and secured the right to the property। Artisans in cities were freed from the control of guides, transport and communication system were improved, the feudal system was abolished। क्वेश्चन नंबर 5 है what is tariff, tariff a duty levied on goods imported from another country is called tariff। This duty or tax is collected at the point where the goods enter the country, that is at the border port and the airport। Explain any 2 differences between renewable and non-renewable resources, so renewable resources do not get exhausted even after continuous use such as solar energy, wind energy etc., whereas there is a danger of depletion of non-renewable resources due to continuous use such as coal, petroleum etc. The use of renewable resources does not cause pollution, whereas the use of non-renewable resources pollutes the environment। क्वेश्चन नंबर 7 है by what names is slash and burn system of agriculture known in different parts of the world, so the slash and burn agriculture is known as milpa in Mexico and Central America, कोनुको इन वेनेजुला, रोको इन ब्राजील, मोसेल इन सेंट्रल अफ्रीका, लद्दाख इन इंडोनेशिया, रे इन वियतनाम।
Question number 8 है mention any two constitutional provisions that make India in secular country. यहाँ पर आएगा there is no official religion for the Indian state. The constitution prohibits discrimination on grounds of the religion. The constitution provides to all individuals and communities freedom to profess, practice and propagate any religion. Question number 9 है why is there a need of power sharing in democracy? तो power sharing is desirable for the establishment of political arrangement and to check the political conflict and political instability. दूसरा है यहाँ पर इन ए डेमोक्रेसी ऑल द ग्रुप्स आर लिंक्ड विद द गवर्नेंस सिस्टम थ्रू पावर शेयरिंग विच मेंटेन्स इफिशियंसी. क्वेश्चन नंबर 10 है राइट एनी टू मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट. द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट फर्स्ट वन इज द गोल्स ऑफ डेवलपमेंट फॉर डिफरेंट पीपल कैन बी डिफरेंट एंड इवन contradictory people have mixed goals for development. Second, the components of the development are increases in income, equality, freedom, security and respect for others. Question number 11 है why is agriculture important for rural areas? तो यहाँ पर होगा कि nearly half of Indians population lives in villages and agriculture is the primary source of income for rural people. Farming and related activities provide rural infrastructure, employment opportunities and more. Therefore agriculture is important for rural areas. Question number 13 है suggest two measures to reduce unemployment in India. First one is new employment opportunities should be created in the primary or agriculture sector so that unemployment can be eliminated. Infrastructure facility like transport, banking, communication should be developed in the country so that agriculture and industrial sector can develop. Question number 13 है how do multinational companies work? Explain. First, multinational companies establish their factories and offices in more than one country. The capital investment in these companies is high, therefore the demand and supply of their products is large. अब जो क्वेश्चन है बच्चों वो आपके अब बड़े क्वेश्चन होने वाले हैं. अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 14 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है. डिस्क्राइब द मेजर चेंजेस दैट अफेक्टेड द पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी. तो पहला होगा यहाँ पर बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी द फॉलोइंग चेंजेस टुक प्लेस इन द सिस्टम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया. फर्स्ट वन इज विद द spread of the Swadeshi movement, India nationalists mobilized people to boycott foreign cloth. After 1906, the export of India yarn to China declined, so industrialists in India began shifting from yarn to cloth production. Cotton piece goods production in India doubled between 19 and 1912. Industrial groups organized themselves to protect their collective interests, pressurizing the government to increase tariff protection and grant other concessions. अगला है यहाँ पर कि what is meant by the proto-industrialization. Within this system, a close relationship developed between the town and countryside. Explain. तो proto-industrialization, industrial production for the international market was carried out even before factories were established in England and Europe. This production was not carried out in factories, so this phase was called proto-industrialization. This is evident from the fact that although merchants were based in towns, but the work was done mostly in the countryside, such as buying wool, spinning yarn and weaving and colors and dyeing was carried out in the village. Only the finishing of the cloth was done in the London. Question number 15 था यहाँ पर आपका what do you understand by a dam? Explain the difference between traditional and modern dams. तो यहाँ पर आएगा dam is a barrier across flowing water that obstructs direct and retards that flow, often creating a reservoir, lake and impoundment. Dam refers to the reservoir rather than the structure. Dams were traditionally built to impound rivers and rainwater that could be used later to irrigate agriculture fields. Today, dams were built not just for irrigation but for electricity generation, water supply for domestic and industrial use, flood control, recreation,
inland navigation and fish breeding, hence dams are now referred as a multi-purpose project. और वाला क्वेश्चन है यहाँ पर, डिस्क्राइब सम ऑफ द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर ऑफ एंशिएंट इंडिया. Some hydraulic structures in ancient in India are follows. First one, in the 1st century BC, Sri Garbhardanpura near Allahabad, sophisticated water harvesting system was made to channelize the flood water of the river Ganga. During the time of Chandragupta Maurya, dam, lakes and irrigation system were built extensively. Evidences of sophisticated irrigation works have also been found in Kalinga in Odisha, Nagarjunkonda in Andhra Pradesh, Benur in Karnataka, and Kolhapur in Maharashtra. In the 11th century, Bhopal Lake, one of the largest artificial lakes of its time, was built. Question number 16 है अब आपका, what is meant by a federal system of government? Mention its two main features. यहाँ पर है फेडरल गवर्नमेंट. इन ए फेडरल सिस्टम सुप्रीम पावर इज डिवाइडेड बिटवीन टू लेवल, सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस constituent units of the country. Both these levels of governments enjoy their power independent of the other. Both these governments are separately answerable to the people. Two main features of the federalism are as follows. First one is the institutionalization of the jurisdictions of the respective level of government are specified in the constitution, so the existence and authority of each tier of government is constitutionally guaranteed. Source of revenue for each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy. और का क्वेश्चंस की बात करें यहाँ पर, इसके अंदर बोला गया अंडर विच लिट्स इन the division of legislative powers between the central and state governments made in Indian Constitution. Explain. Indian Constitution has divided the legislative powers between the central and state government in the following three lists. पहला है यूनियन लिस्ट, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशंस एंड करेंसी एक्सेट्रा. Mentioned in this list are the national importance and only the central government has the right to make law on these. Second, state list. The subjects mentioned in this list like police, trade, commerce, agriculture and irrigation are the local importance of, and the state government have the right to make laws on these. Concurrent list includes the subjects of common interest such as education, forest, trade, union, marriage, adoption and succession. Both the union and state governments can make laws on these subjects. In the event of the conflict, the central government laws will prevail. Question number 17 है यहाँ पर, Ashwin is a 10th grade student. He visits a bank branch for the first time with his grandmother. He has to fill the necessary details on his grandmother's bank check to withdraw cash. Help Ashwin analyze the necessary detail on the check. So to complete the check, Ashwin needs to fill the following details. Date. The date on which the check is being used must be entered on the check. Payee name. The name of the payee must be entered on the check. Amount. The amount to be paid to the payee must be entered in both figure and words. Signature. The account holder signature is required on the check, which makes the check valid. Account number and branch name. The account number and branch name must be entered on the check so that the bank knows from which account the money is being withdrawn. और वाला क्वेश्चन है, a poor woman living in a small village of Mangyapura took a loan from a money lender for farming. Unable to repay the loan on time, she had to sell some of her ancestral land. Analyze the credit problems in rural area in the context of this incident. तो पहला है exploitation by money lenders in rural areas. Money lenders lend money at high interest rates and seize land and other assets if the loan is not repaid on time. Lack of financial literacy. Due to the lack of financial literacy, people are unable to make appropriate financial decisions. They often take loan at high interest rate and lose their land and assets in order to repay the loan. Lack of banking services. Due to the lack of banking services in rural area, people face difficulty in accessing financial services. Ultimately, they turn to money lender for loan. आगे की बात करें, 3 क्वेश्चंस है आपके ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होने वाले हैं. पहले यहाँ पर अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द रोलेट एक्ट, व्हाई डिड इंडियंस अपोज इट एंड व्हाट वाज द ब्रिटिश गवर्नमेंट पॉलिसी टू सपोज द प्रोटेक्ट. एक्सप्लेन.
तो रोलेट एक्ट, द ब्रिटिश गवर्नमेंट was very worried about the increasing popularity of the Indian national movement. Therefore, it decided to enact strict law to suppress the nationalist. In March 1919, the Imperial Legislative Council passed the Roulette Act. It gave the government enormous power to express political activities and allowed detection of political prisoners without trial for 2 years. This led to intense outrage outrage among Indians. Reasons for Indian opposition to the Roulette Act: this law gave the British government to power to imprison any person without trial. People were not allowed to have a lawyer, fee and appeal. This law was placed to oppress Indian. Through this act, the British government wanted to suppress the wave of freedom struggle. The repressive policy of the British government. The British administration decided to clamp down, and nationalist local leaders were picked up from Amritsar, and Mahatma Gandhi was barred from entering Delhi on 10th of April. The police is Amritsar fired upon a peaceful procession. Martial law was imposed, and government and General Dyer took command on 13th of April. The infamous जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। और वाले क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर है डिस्क्राइब इन डिटेल एनी टू मूवमेंट्स लेड बाय गांधी जी। तो पहला है यहाँ पर कि गांधी जी लॉन्च्ड वेरियस मूवमेंट्स ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। Two of the major ones are: first, non-corporation movement. The non-corporation movement is an important chapter of the freedom struggle. This movement began in 1920, and its main objective was to refuse the cooperative with the British government. The main reasons for this movement were the Jallianwala Bagh massacre or the Rowlatt Act, and opposition to the policies of the British government. During this movement, Mahatma Gandhi organized satyagrah, in which all Indians protest against the British government in a non-violent manner. Indians boycotted foreign goods, causing economic losses to the government. Students and teachers boycotted schools and colleges owned by the British government. Lawyers boycotted the court, which pressured the British government to consider the demands of the Indians. Second है civil disobedience movement. This movement was started by Mahatma Gandhi in 1930. The main reasons for this movement were the arrest and Gandhiji for violating the SALT law enacted by the British government, and the declaration of the Congress as illegal organization. During this movement, Gandhiji and his followers broke the SALT law and boycott foreign goods. Although the movement was not completed successfully, it made a significant contribution to the Indian freedom struggle and established Mahatma Gandhi as a prominent leader. As a result of the movement, the British government signed to the Gandhiji's Irwin Pact, under which the Congress was recognized as a legislative organization, and Gandhiji was invited to participate in the second round table conference. क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पर He explained the meaning of political parties, discuss their various roles in the democracy. तो कौन कौन से हैं कि meaning of political party. A political party is a group of people who came together to contest elections and held power in the government. They agree on some policies and programs for the society with a view to promote the collective good. Various functions of political parties in democracy. The various functions of the political parties in democracy have been explained under the following points. Role as candidates. Elections are fought among the candidates put up by political parties. Political parties play an important role in elections by putting up their own candidates. Role of policy makers. Political parties also play the role of policy makers. Governments often formulate their policies in accordance with the opinions of the parties. Role in lawmaking. Parties play a decisive role in making laws for a country. Formally, laws are debated and passed on the legislature. Role in forming government. The political party with the majority forms run the government. Whichever political party has the majority in the legislature from the government and runs it and formulates policies according to its ideology. Role as opposition. Members of parties that are not part of the government play the role of the opposition. Role in forming public opinion. Political parties play an important role in forming public opinion. They raise and decide issues. Parties often organize protests to address public concerns. और वाले क्वेश्चंस की बात करें यहाँ पर, why do we need political parties in your view?
व्हाट शुड ए पॉलिटिकल पार्टी लीडर टू बी लाइक, एक्सप्लेन। यहाँ पर आएगा वी नीड पॉलिटिकल पार्टी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, इफ there were no political party in the democracy, no one would be responsible for how the country would be run. Elected representatives would be accountable only for the work done in their constitutions, but no one would be responsible for how the country would be run. In representative democracy, parties bring forward the different views on the various issues. Parties convey different views on various issues to the government. They form a responsible government. They keep the government in check. In our view, any leader must have qualities like leadership, ability, honesty, self-awareness, courage, compassion, etc. A leader should be dedicated to continuous learning. A good leader must be a positive attitude because a positive attitude of the leader inspires other leaders of his party to do good work. A good leader should be courageous to show that if required, he does not hesitate in taking any concrete step in the interest of the country, or does not hesitate away from making laws in the interest of a large section of the country. A good leader should always keep other leaders aware of their goods and motivate them. The goal of the leader should always be the serve the people. A leader should be aware of the technology and ideal leader should always be ready for the solve the country's problem. A leader vision should be broad enough to एंटिसिपेट फ्यूचर प्रॉब्लम्स एंड सो दे सॉल्व देम। अगला है आज का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जिसके अंदर आपको इंडिया का मैप दिया गया है। तो आपको कुछ प्लेस दिए गए जिनको आपको फिल करना है। पहला है आपको बताना है हजारीबाग, केका, गोवा, कल्पकम। दूसरे में बोला है कि कालोल, नहार किएगा, मोरन और बेसेन। तो बच्चों देखो यहाँ पर बात करें, सबसे पहले आ जाएगा आपका हजारीबाग बच्चों। उसके बाद अगर बात करें गोवा आ गया, उसका बाद केका आ गया और आपका बच्चों कल्पकम आ जाएगा। दूसरे की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो गुजरात के अंदर था आपका कलोल था, बेसेन था, साथ ही इधर बात करें महार कटिया था और मोरान था। तो बच्चों इस प्रकार से आपको भारत के जो मैप था उसके अंदर आपको निम्न प्लेस को आपको फिल करना था। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल पर बने रहें, चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।